Hello friends, myself Dr. Kirti Sriram Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawahar. So friends, I welcome you all for the TY BSc Inorganic Chemistry Semester 5 lecture of Comparative Chemistry of Group 16. So friends, in our last lecture we have discussed about the allotropes of oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. So we have also discussed about their crystal structure, how their rings are formed and how different type of allotropes they show. Okay, so we have also discussed about the physical properties of group 16 elements. So today we will discuss about the chemical properties of group 16. Okay, so they are very simple. All these elements in group 16 are quite reactive, but the reactivity decreases with increase in atomic number. So friends, you remember this thing that though they are reactive, but their reactivity decreases with increase in atomic number. Okay, so therefore O2 is chemically most reactive, and then sulfur, selenium and tellurium are moderately reactive. So who is most reactive in this group? So that is oxygen. So very first chemical reaction is of air. So action of air is not very much affected to the group 16 element, but when they are heated with air or oxygen, they will form dioxide. So we all know that whenever there is reaction of oxygen with any element, it will form oxide. Okay. So when sulfur is reacting with oxygen or directly with air, it will form sulfur dioxide. So similarly they will form selenium dioxide and tellurium dioxide. So these are the reaction of air. Then second important reaction is reaction of acids. So they are unaffected by non-oxidizing acid. So in case of sulfur, it is oxidized by hot concentrated nitric acid to sulfuric acid and selenium to selenous acid. So if you react your sulfur with HNO3, it will give you H2SO4 plus nitrogen dioxide and water. Okay, so this is the reaction of hot concentrated nitric acid to the sulfur. So similar reaction is seen with selenium. So selenium when heated with hot concentrated nitric acid, it will give you similarly selenium sulfuric acid similarly plus nitrogen dioxide and water is also released. So tellurium is oxidized, but the product is a basic tellurium nitrate. Okay, so it indicates the metallic character of the element. Then the further reaction is of action of alkalis. Okay, so in case of alkalis, when you react our sulfur, selenium or tellurium, what you have to do, they get dissolved in alkalis. Okay, so we know alkali examples are NaOH, KOH, right. So sulfur reacts with concentrated solution of alkali and it forms sulfide and sulfite. Okay, so suppose you take pure sulfur and you react it with NaOH, then it will give you Na2SO3 plus Na2S and plus water. So it will give you sulfide and sulfite. Okay. Then further is action of non-metals. Okay. So when our 16 group elements react with non-metals like carbon, hydrogen and halogen, they give following reaction. Okay. So suppose sulfur is reacting with carbon, it will give you carbon disulfide. Okay. If react sulfur with H2, it will give H2S. And suppose tellurium is reacting with iodine, it will give you Ti4. Okay. So this way they will react with various non-metals. And further is action of metal. So suppose they react with metal, they will form various sulfides, like copper is reacting with sulfur, it will form cuprous sulfide. So these are the various chemical properties of group 16. Now we will go to the important topic, that is manufacturing of sulfuric acid. Okay. So for this you have to use contact process. The name of the process is called as contact process. So what is the principle of this particular process is
the manufacturing of sulfuric acid is carrying out in 3 steps, and there are 3 chemical reactions. So, in very first reaction there is oxidation of sulfur to sulfur dioxide. So, in simple form we can say when sulfur is reacting with air or oxygen, it will form SO2. Then after that next reaction is oxidation. So, in that case SO2 जो form हो गया है, it is further oxidized with O2 and then it will give you SO3. Okay. So, first sulfur is converted into SO2, SO2 is further converted into SO3, and then third important reaction is absorption of SO3 by H2O. So, when this SO3 is passed on H2O, it will form H2SO4. Okay. So, these reactions are very simple. First one is formation of SO2, okay, that is oxidation of sulfur. Then next one is formation of SO3 from SO2, and then SO3 is reacting with H2O to form H2SO4. So, these are very simple reaction. So, this reaction actually take place with the help of catalyst. Okay. So, whenever you want to form or prepare H2SO4, you have to use catalyst. Okay. So, we know the catalyst will increase the rate of reaction. So, in this case you can choose two type of catalyst. One is called as platinized asbestos and the second one is called as vanadium pentoxide. Okay. So, actually the formation of SO3 is a trimolecular gaseous reaction. So, to increase the rate of reaction you have to use catalyst, and the first one is platinum asbestos. So, when platinum metal is it is generally found in the most suitable catalyst for various reaction, because it can absorb oxygen molecule and then retain it on the its own surface up to 1450 केल्विन. मतलब एक बार अगर एस्बेस्टॉस ने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ लिया तो टेम्परेचर चाहे जितना भी इंक्रीज़ क्यों ना हो वो उसे जल्दी नहीं छोड़ता. सो देयरफॉर इट इज़ वेरी एक्टिव कैटालिस्ट. सो प्लैटिनम कैटालिस्ट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कीमोअब्सॉर्प्शन. ओके, जैसे वेरियस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शंस होते वैसे इसे कहते कीमोअब्सॉर्प्शन. So, oxygen molecule are first absorbed on the surface of platinum and then it is activated. तो ये जो टोटल एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होता है उसे कहते हैं कैटलिस्ट. ओके. सो द एक्टिवेटेड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन विथ सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड. सो फॉर दिस रिएक्शन जो SO2 से SO3 बनाना है हम लोगों को, उसके लिए हमें ये कैटलिस्ट चाहिए. एंड उसके लिए तो हमें SO2 की रिएक्शन करनी है O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ. तो ये जो O2 है ये प्लैटिनम के शीट पर पकड़ के रखते हैं. ओके. सो दैट ऑक्सीजन इज एक्चुअली absorbed on the surface of platinum and then it is made reacted with the SO2 so that it will form SO3. Okay. So the sulfur trioxide form is then deabsorbed. अभी ये जो O2 है वो प्लैटिनम के सरफेस पे है ना, इट इज़ बॉन्डेड विथ और वी कैन से एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम. तो जो SO3 बनेगा SO2 से SO3 वो भी प्लैटिनम के जो शीट है उसके ऊपर बॉन्डेड रहेगा या एब्जॉर्ब रहेगा, तो उसको डी एब्जॉर्ब भी करना पड़ता है. ओके. सो देन वी विल गेट अवर रिक्वायर्ड SO3. हियर देयर इज सम टाइम फॉर्मेशन ऑफ इम्प्यूरिटी दैट इज आर्सेनिक ऑक्साइड और टीन ऑक्साइड टेक प्लेस. तो उसको हम लोग रिमूव करते हैं एंड देन वी गेट प्योर SO3 एज अवर फाइनल प्रोडक्ट. Then the next catalyst we can use is vanadium pentoxide V2O5. तो अभी आप लोगों की जो एग्ज़ाम होगी वो कैसी होगी, इट विल बी लाइक MCQs. तो आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने है ना. सो हियर सपोज दे आस्क यू व्हाट टाइप ऑफ कैटालिस्ट आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4. तो यू कैन से प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस और vanadium pentoxide. Okay. So, in case of vanadium pentoxide, it is also found to be a suitable catalyst for oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide.
तो ये SO2 से SO3 बनाने के लिए वेनेडियम पेंटॉक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं. सो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन. सो पहले क्या करते हैं कि वेनेडियम ऑक्साइड जो है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, उसके साथ SO2 को रिएक्ट करते हैं. देन इट विल फॉर्म V2O4, और जब ये V2O4 फर्दर SO2 और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, देन इट विल गिव यू अगेन V2O5 प्लस SO2 एंड SO3. मतलब फाइनली अपना जो कैटलिस्ट है वो हमें वापस मिलता है और उसी के साथ वी गेट SO3. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. And in some cases a porous carrier having large surface area like alumina or silica gel, it is dispensed with V2O5. Okay, so it will promote the catalytic activity. So this catalyst is very important for formation of SO2 to SO3. Okay, so in this overall process, the effect of pressure as well as effect of space velocity and effect of concentration is also considered. So if you keep all the optimum level of all this type, then you will get the H2SO4 very easily. Okay, so what is the process that we will see? See, this is the schematic diagram of manufacture of H2SO4 by contact process. You please remember this name. This name is what? Contact process. So here what you have to do, first sulfur dioxide is produced by burning sulfur or pyrite of iron in air. तो simply in the first case what you have to do, burner use करना है और उसमें SO plus SOO2 के साथ SO2 बनेगा. Okay, the air is supplied to the sulfur and then the gas from burner enter in the dust purifier. जो बर्नर है उसके बाद क्या है, there is a dust purifier in which they meet with each other and it meets with powerful jet of steam. This steam condense on the dust particle as a result of which it settle down. तो फिर जो गैस बनेगा, that gas goes into next chamber and it is cooled to 373 Kelvin by passing through lead pipes. तो आगे जो हम लोगों को एक पाइप की तरह दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज कूलिंग पाइप. तो ये पाइप क्या करेगा, इट विल कूल द फॉर्म गैस. ओके, और इस पाइप के अंदर वाटर स्प्रेड करते हैं बाहर से, इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलिंग पाइप. ओके, फिर दिस कूलिंग गैस इज गोज इनटू द ड्रायर. मतलब क्या होगा कि एक बार ये जो गैस फॉर्म हो गया है डस्ट प्यूरीफायर के अंदर, उसको प्यूरीफाई करेंगे एंड फाइनली इट विल गो टू द ड्रायर. सो द टावर इज पैक्ड विथ फ्रोजन और ब्रोकन quartz. The gas will meet a spray of concentrated sulfuric acid. This acid will remove the moisture and the gas will get dried. तो ये जो गैस है उसके ऊपर भी सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे छिड़कते so that it will get dried. So arsenic oxide present in reacting gases are removed in arsenic purifier. अगर उसके अंदर जैसे बताया था कि आर्सेनिक या टीन का इम्प्यूरिटी रह सकता है, so that impurity is removed in arsenic purifier. So next part is that arsenic purifier. This is a tower in which ferric hydroxide is placed on shelves and the ferric hydroxide remove the arsenic oxide which otherwise poison to the catalyst. तो यहाँ पे अगर किसी केस में आर्सेनिक ऑक्साइड है तो उसको ये फेरिक हाइड्रोक्साइड निकाल देगा. Then in the next thing, any traces of dust is still remaining, it is removed in the control precipitator. तो ये जो कॉन्ट्रेल प्रेसिपिटेटर है इसके अंदर अगर कोई और इम्प्यूरिटी बची है तो उसे निकाल देते हैं. ओके, सो इन दिस केस द डस्ट पार्टिकल आर गिवन एन इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड देन मेड पास टू द चार्ज प्लेट्स so that all the dust particle will get attracted toward the particular plates having charge and pure gases are enter into next filter box. तो अगर कोई इम्प्यूरिटीज़ है तो ये फिल्टर बॉक्स के अंदर घुस जाती है
और जो सारी इम्प्योरिटी है वो क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर में रह जाती है. सो नेक्स्ट योर गैस, प्यूरिफाइड गैस विल एंटर इनटू अ फिल्टर बॉक्स. ओके, सो इन दिस फिल्टर बॉक्स व्हाट विल हैपन, if the purity of the reacting gases are tested in this particular box, that box further is called as Tyndall box. Okay, so in this Tyndall box there is beam of light which passes through a dark chamber containing the reacting gases. Okay, so if still some dust particles are present, they scatter the light and thus their presence is detected. तो यहाँ पे हम लोग फिर से ऑप्टिकल लाइट का यूज़ कर रहे हैं, और अगर इस पूरे गैस में फिर से कोई डस्ट पार्टिकल बचता है इतना कुछ होने के बाद, तो वो इस टिंडॉल बॉक्स के अंदर से पास करते हैं, और अगर डस्ट पार्टिकल है तो उसके अंदर के लाइट को वो स्कैटर करता है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट देयर प्रेजेंस. सो इफ़ द गैस इज स्टिल इम्प्योर और उसमें फिर से कुछ डस्ट पार्टिकल है, देन अगेन इट इज़ सेंड बैक टू द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. मतलब वहाँ से वो निकल के फिर से ये जो पहला है एयर बर्नर, उसमें डाल के पूरी प्रोसेस रिपीट करते हैं. ओके, इफ़ द गैस इज़ प्योर देन इट इज़ पास्ड इन द नेक्स्ट चेम्बर एंड दैट इज़ कॉल्ड एज हीट एक्सचेंजर. ओके, तो नेक्स्ट पार्ट आप लोग देख सकते हो इन डायग्राम में कि अगर वो गैस प्यूरिफाइड है तो उसको हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं एंड इट इज़ प्री हीटेड टू 573 Kelvin. Okay, the hot gas from this converted is again pass into the converter. अभी क्या होगा, उसके अंदर जो कैटालिस्ट है वो कैटालिस्ट रिएक्शन करेगा एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ योर वेनेडियम पेंटॉक्साइड एंड एक्चुअल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड and sulfur dioxide to sulfur trioxide will take place. So here the actual reaction of formation of SO3 take place. Okay, then the cooled sulfur dioxide is sent into the absorber. वो जो अपना गैस बन रहा है SO3 उसको कहाँ पे भेजते हैं, in absorber, that is the next chamber. Okay, in which either concentrated 98% of sulfuric acid is made to descend down. Sulfur trioxide is not absorbed directly in a water but in a mist of sulfuric acid droplet. So ये जो acid mist है it does not easily settle down and therefore it is dangerous to worker. तो इसलिए उसको धीरे धीरे absorber के ऊपर absorb कर लेते हैं. Okay, then finally when there is formation of 98% of sulfuric acid in this particular chamber which is called as oleum. Okay, ये word आपने सुना होगा पहले. So ये जो oleum है it is again absorbed and 99% of pure sulfuric acid is obtained. Then the water in the acid is absorbed, sulfur trioxide, और अभी ये जो मिक्सचर है उसको फाइनली जो सल्फ्यूरिक एसिड का कंटेनर है सबसे बिलो वहाँ पे हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं. ओके, सो इन दिस वे देर इज़ actual formation of H2SO4 take place. So in India major portion, that is about 72% of the production is used to manufacture of fertilizer and phosphoric acid. ये जो सारा बच जाता है उसका यूज़ यहाँ पे होता है. So it is used in petroleum refineries and textile industries. So this way we can prepare H2SO4 by contact process. Okay. So this is all about the group 16 chapter. Now your exam will be there. So I wish you all the best for your exams. Stay safe and stay happy. Thank you.